ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ श्रीदुर्गायै नमः। अध त्रयोदशोऽध्यायः। उत्तरचरित्रं ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबलाभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यं ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितं व्रतं। निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिन संस्थितः। स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन्। तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्। अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः। निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्राश्रुगुक्षितम्। एवं समाराधयतो श्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दना। मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनीम्। अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः। ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविद्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्। हत्वा रिपूनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः। तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यदाभिलषितं वरं। बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुताम्। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरदक्षत्रियर्षभः। सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरदवैश्ययोर्वरप्रधानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ तत्सत्। ॐ श्रीदुर्गायै नमः।